आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव सोलो ट्रिप्स. जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रुकना है रुको, जहाँ खाना है खाओ, जो खाना है खाओ, नो रिस्ट्रिक्शंस. Food here is seriously awesome. Everything that I've eaten over here, you know, omelette, coffee, veg, non-veg, awesome. क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. इतना प्यारा वादा है नमक वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझने. This is my last night here at the camp and it's super fun over here tonight. Chicken pakoras. मेरी टांगें बहुत बुरी तरह से पेन कर रही थी ट्रैक के बाद, बट अभी मैंने पेन किलर खाया है and I'm much better now. This camp stay is really an amazing place. Okay, that's a nice song. Yeah, so this camp stay is really an amazing place. By chance I came across this on the internet. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो मेरे को बताना, I'll share the details. But amazing place, seriously. Negative temperature में गरम गरम कॉफ़ी. बाहर ना बहुत बुरा वाला फॉग हो रहा है, बट मैं दिखाऊंगा नहीं फॉग, बिकॉज मेरे दोस्त मेरे से कहते हैं दैट मैं व्लॉग में सिर्फ फॉग दिखाता हूँ. सो अब से मैं फॉग दिखाऊंगा ही नहीं. गुड मॉर्निंग. Last few hours at the camp. Bas I'll have my breakfast and then I'll leave. Beautiful place. मन नहीं हो रहा जाने का, but जाना पड़ेगा. So I'm all set to leave this place, this lovely place. बट जाने से पहले एक टूर करा देता हूँ अपने छोटू से टेंट का एंड अपनी कैंप साइट का.
by my lovely tent. Best 2 days of my life. Camping, trekking, amazing. Bye bye McLeodganj. Hope to come back soon. See this place where I was staying, the camp, where I was camping. Amazing place, amazing food, very reasonable. Amazing experience, amazing people. Shiv Shakti Guest House is the name of their hotel or guest house, and Triund View is the name of their camp. Right? So I'll speed up now because I have a long way to go. काफ़ी दूर जाना है. 1.5 किलोमीटर की वॉक करनी है मेरे को to catch the bus to Dharamshala. I can't tell you how much I love solo trips. जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रुकना है रुको, जहाँ खाना है खाओ, जो खाना है खाओ. No restrictions. So this was my second solo trip. First one in Shimla and second this one in McLeodganj. Looking forward to my third solo trip. Hopefully Mizoram or Nagaland. यहाँ से अगर गिरे तो क्या हाल होगा? I don't want to go back, man. I don't want to go back. Chicken momos मेरे favorite हैं, and wherever I go, I make sure I try. Laces खुल गए. So I was saying chicken momos are my favorite, and I make sure wherever I go, I try the local momos there. On my way, I'll see if I can find some momo stall, momo point, or cafe where I can eat chicken momos. McLeodganj के local chicken momos. You know, while I was coming to McLeodganj, I mean मैं रात के टाइम पे आया था, sunset के बाद. So on my way I couldn't capture much views. Now that I'm returning, I hope to. ट्रैक पे टांगे तोड़ने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं आज चल पाऊँगा, but I'm good to go. I mean, the painkiller really helped. It was my first ever trek and I did quite well. I did very well actually, जैसा मेरे गाइड ने बोला, because जो लोग जिन्होंने हमसे पहले शुरू किया था उनको भी हरा दिया हमने. So yeah, I did very well and I'm proud of myself. ट्रैक स्टार्ट हुआ, मुझे लगा नहीं था मैं कर पाऊँगा. बस स्टैंड आगे है, मोमो पॉइंट भी आगे है. आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन कि एक सोलो ट्रिप तो ज़रूर करो लाइफ में, because it's addictive, it's amazing, it's beyond words, seriously. Okay, I've been told कि ICICI बैंक के सामने there's a momo point. Where is it? Is it this one? Mona Residency and Family Restaurant. यही होगा. Come, let's find out.